My dear students, I am taking third part of chapter first, ninth class, science. In third part, I will take liquids and properties of liquids. In second part, I have mentioned the properties of solid. There were 11 properties of solid which I have mentioned in the second part. Now I am taking the properties of liquid. Matter have three forms: solid, liquid and gas. Now I am taking the second, liquid. The properties of liquids. Liquids have no fixed shape. प्यारे विद्यार्थियों, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, जिस भी बर्तन में डालेंगे उसकी शेप वैसी ही हो जाएगी. लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स होता है, चाहे किसी बर्तन में डाले, शेप उसकी चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन वॉल्यूम विल बी द सेम और वॉल्यूम विल रिमेन सेम. थर्ड प्रॉपर्टी, दे टेक अप द शेप ऑफ ए कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. एक लिक्विड इसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी है, वो अपनी शेप बदल लेते हैं. लेकिन कैसे बदलते हैं? जिस भी बर्तन में डालेंगे उनकी शेप वैसी ही बन जाएगी. दे कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. फोर्थ प्रॉपर्टी, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड. लिक्विड सॉलिड की तरह रिजिड नहीं है. सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल नहीं होती. तो इसलिए ये लिक्विड जो है, ये सॉलिड की तरह कंप्रेसिबिलिटी इनकी जो है कम नहीं होती, सॉलिड की बहुत कम होती है, लिक्विड की सॉलिड से कुछ अधिक होती है. अब ये देखिए, लिक्विड जो है सॉलिड की तरह रिजिड नहीं होते और कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इनको फ्लूइड बोलते हैं. पांचवी प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम एज कंपेयर टू द सॉलिड. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर स्पेस. My dear students, as I have told, the particles of the matter have space between them. The particles of solid have less space, particles of liquid have more space, and particles of gases have more and more space as compared to solid and liquids. So, the particles of liquid have greater space between them as compared to the solid because they have more diffusion property. So now I am taking sixth part. ये मैं हटा देता हूं यहां से. सिक्स्थ पार्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन. सिक्स्थ, the rate of diffusion, the rate of diffusion, the rate of diffusion of liquid particle, the rate of diffusion of liquid particle is greater than solid, is greater than the solids. My dear students, ये मैंने पांचवी प्रॉपर्टी बताई थी. द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड हैव ग्रेटर स्पेस. जब इनके अंदर ग्रेटर स्पेस है तो ये प्रॉपर्टी देखो छठी इसके बिल्कुल अनुरूप है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड पार्टिकल इज ग्रेटर देन द सॉलिड. जब उसमें स्पेस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी will be more applicable. So the diffusion property is more applicable in the liquids.
because the particles of liquid have more space. Seventh, the particles of liquid move freely. ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसमें फ्रीली मूव करते हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, सॉलिड में फ्रीली मूव नहीं करते, लिक्विड में उसके पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं बिकॉज दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम. एट्थ प्रॉपर्टी, solid and liquids, solids and liquids can be diffused. Solids and liquids can be diffused in liquids. There are so many examples. Solid and liquid can be diffused in liquids. In sea, you see there are so many solids and liquids diffused among each other. So the aquatic animal use this property. Ninth, solid, liquids and gases can be diffused in liquids. This is the ninth property. My dear students, just like solid and liquids can be diffused in liquid, in the same way, solid, liquid and gases can be diffused in the liquids. These three types can be diffused in this liquid. And by using this property, all the animals living in the water, or you can say all the aquatic animals, use these two properties, 8th and 9th. So my dear students, these are the properties of liquids. There are nine properties of the liquid. And in these 9 properties, all the properties are different from the solid properties. First property, liquids have no fixed shape. Second property, liquid have a fixed volume. Third property, they can take up the shape of a container in which they are kept. Fourth property, liquids are not rigid but can be called fluid. Fifth property, the particles of liquid have greater space between them as compared to the solid. Sixth property, the rate of diffusion of liquid particle is greater than the solid. Seventh property, the particles of liquid move freely. Eighth property, solid and liquid can be diffused in liquid. Ninth property, solid, liquid and gases can be diffused in liquid. My dear students, these are 9 properties of the liquids. So remember these property. Whenever you get a chance, write down the properties of liquid so that you can write these property there. So in second part, I have mentioned the properties of solid. In third part, I have mentioned the properties of liquid. And in fourth part, I am going to teach you the properties of the gases. So my dear students, in the last, I want to make a request to you. Please like and subscribe the channel. I shall be very thankful to you.